عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Today we are going to discuss about the unit number 10, A World Without Books, کتابوں کے بغیر دنیا۔ First of all, I am giving you some brief introduction about this chapter. Throughout history, scholars and those peoples who could read have been greatly revered by their fellow men because they were believed to be the carrier and transmitter of knowledge. Before modern times, books were extremely rare and were intensely sought after by those who could read them. In the Western world, books were so rare that the only book that many of those who could read has read was the Bible, a book that certain priests could not even read. The ownership of and the ability to read books were therefore a source of great prestige for those who had the privilege of having them. This privilege eventually came to be spread all over the world as more people became literate and books became commonplaces. However, there has certainly developed a trend where people have come to prefer other forms of entertainment at the expense of books, which are slowly but surely being viewed as relics of the past. A world without books is a concept that many people are yet to comprehend because a majority of the literate people in the world today at some point enjoy reading. While this is a fact, as one has to consider that there have developed newer and seemingly more interesting forms of entertainment which many of the younger generation are adapting to instead of books. This is creating a situation similar to that in the novel Fahrenheit 451, where books are of no value and any that are found are destroyed. In the world of this novel, books are considered by society to be useless, and due to popular demand, it has become the duty of the fireman to destroy every available copy that is found. The influence of other media such as soap operas has become so great that the population prefer it to the books, which are looked upon as being too strenuous to read. Books, mainly because of the conflicting information that is found within them, have disillusionized many of the characters in the novel. Betty, the boss of the main character, is said to have once been an avid reader, but his disillusionation with books soon led him to get involved in their destruction as a firefighter. Imagine a world without books. Imagine a world without schools, libraries, or bookstores. There would be no Huckleberry Finn, Robinson Crusoe, Tom Sawyer, or Alice in Wonderland. There would be no Dr. Seuss, Herman, or Stephen King. We would not have our weekly book clubs. Children would have no bedtime stories. What kind of world would we live in without books? Would we even learn how to read? How would we express ourselves or communicate with each other? It is hard to imagine. So students, this was a brief introduction about this chapter. Now we move on to the translation of this chapter. First paragraph. An Irish novelist, Colm Tóibín, once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on Kowloon footpath reading a book. The man's face was stern with concentration and his finger tracing the line being read. At
the man's expression would be disturbed in frustration at his progress. Finally, the reader looked up at the sky while his face was beaming. आयरलैंड के एक नॉवल निगार कौम ताइबिन ने एक मरतबा कहानी सुनाई जो कैंटिन के एक आदमी से मुतल्लिक थी, जिसे कोलून के फुटपाथ पर एक किताब पढ़ते देखा गया। आदमी का चेहरा मुताले में गर्क होने की वजह से संजीदा था और पढ़ते वक्त उसकी उंगली सतर का पीछा कर रही थी। कभी कभार इस दौरान आदमी के तासुरात परेशानी का शिकार हो जाते। आखिरकार पढ़ने वाले ने ऊपर आसमान की तरफ देखा, जबकि इसका चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था। It doesn't matter whether it was because of a sudden joy with the act of reading or revelation from what was written or delight at how the story resolved. The point is that he was in possession of something deliciously private, a connection between him and the writer, between the real word and the word described upon the pages. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आया कि यह मुताले के अमल की फौरी खुशी की वजह से था या जो कुछ लिखा हुआ था उसकी आगाही की वजह से था, या उस बात की खुशी कि कहानी जिस तरह अंजाम को पहुंची। असल बात यह है कि उससे एक अच्छा ज़ाती एहसास हासिल हुआ। उसके और मुसन्निफ़ के दरमियान एक राब्ता हकीकी दुनिया और इस दुनिया के दरमियान जो सफ़हात पर बयान की गई थी। Student, there is a question in a box. Have you ever experienced the same feeling while reading a book? So the answer is yes. I have often experienced such feeling. Rather, whenever I read, I get involved in the text. There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 1. Stern. Sakht means strict. Frustration, परेशानी, annoyance. Beaming, चमक रहा, shine. Sudden, अचानक, unexpected. Revelation, आगाही, disclosure. Delight, खुशी, happiness. Possession, मलकियत, ownership. Recounted, सुनी सुनाई या बताई हुई, describe. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 1. First one is stern. His voice was stern again. Frustration. The frustration in his voice was clear. Beaming. She was positively beaming with pleasure. बेटा यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं, बाकी आपने खुद से घर में प्रैक्टिस करनी है। पैराग्राफ नंबर 2. There is a frequently asked question, what would the world be like without books? The very question is absurd and depressing. It is always said that the latest technology signals the demise of the books. Decades ago, it was thought that the radio would replace books. This fear has persisted throughout with the invention of television and internet. एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, किताबों के बगैर ये दुनिया कैसी होगी? यही सवाल फजूल और मायूस कुन है। ये हमेशा कहा गया है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी किताबों के ख़ात्मे की तरफ इशारा करती है। कई दहाइयों कबल ये सोचा गया कि रेडियो किताबों की जगह ले लेंगे। इंटरनेट और टेलीविज़न की इजाद तक ये खौफ बरकरार रहा। बट सीन्स लाइक दैट ऑफ कैनोटेंस man reading the book negate the notion that modern advances pose a threat to reading. Books are themselves a form of technology that is spread over the pages and makes us delve into the complexities of life. कैंटन के आदमी जिसे मनाजिर इस बात की नफ़ी करते हैं कि जदीद पेशरफ्त मुताला के लिए एक ख़तरा बन गई हैं। किताबें ख़ुद टेक्नोलॉजी की एक किस्म है जो कि सफ़हात पर फैली हुई हैं और हमें ज़िंदगी की उलझनों की छानबीन करने वाला बनाती हैं। स्टूडेंट, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन अ बॉक्स. कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक द प्लेस ऑफ बुक्स? क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी किताबों की जगह ले सकती है? सो द आंसर इज़ नो. मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस बुक्स. ऑन स्क्रीन टेक्स्ट इट is not equal to a printed text. There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 2. First one is absurd. Fazul, ridiculous. Replace, badalna, return. Fear, खौफ, terror. Demise, zawal, मौत या फिर death. Notion, ख्याल, idea. Negate, नफ़ी करना, nullify. Delve,
तहकीक करना, go through, spread फैलना, expand. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 2. First one is absurd. It had an absurd ritual and strange uniform. Replace. They recently replaced the old phone system. Fear. You should fear this boy. तो बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं, बाकी आपने खुद से घर में प्रैक्टिस करनी है और इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स को भी याद रखना है. पैराग्राफ नंबर 3. Literature is the story of humans. It is the record of who we are, where we come from, and where we are going. Books make us travel at large. During our journey, we are connected with humanity. We identify ourselves with the characters we meet and learn whether we love, loathe, fear, or flatter. They help us comprehend our faults and aspirations. अदब इंसानों की कहानी है. ये एक सरगुज़िश्त है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं. किताबें मुकम्मल तौर पर हमें सैर करवाती हैं. हमारे सफ़र के दौरान हम इंसानियत से जुड़ जाते हैं. हम खुद उन किरदारों से मिल जाते हैं जिनसे हम मिलते हैं और सीखते हैं कि आया हम मोहब्बत करते हैं, नफ़रत करते हैं, डरते हैं या खुशामद करते हैं. वो हमें हमारी गलतियों और आर्जुओं को समझने में मदद करते हैं. They tell us who could we become if we are not careful. Reading provides the deepest connection to the morals that make us human and part of the large society. वो हमें बताते हैं कि अगर हम मुहतात ना हुए तो हम क्या बन जाएंगे. मुताला इखलाकियात के साथ गहरा तरीन ताल्लुक़ फ़राहम करता है जो हमें इंसान और एक वसी माशरे का हिस्सा बनाते हैं. There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 3. Travel, सफ़र करना, move, connected, मुंसलिक होना, associated. Learn, सीखना, gain knowledge, loath, नफ़रत करना, hate. Flatter, खुशामद करना, praise. Faults, कसूर, guilt. Aspiration, ख्वाहिशात, desires. Morals, इखलाकियात, lesson. Comprehend, समझना, understand. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 3. First one is travel. I would like to travel throughout the country. Connected. He is well connected in political circles. Learn. He quickly learned how to do it. Paragraph number 4. Books are a source of comfort for us. They are a safe shelter. Throughout human history, man has found peace in the written works. Books are bridges. Through their pages, we make our contact with society. Those who read more are better prepared to face the world than those who don't read. किताबें हमारे लिए सुकून का एक ज़रिया हैं. ये एक महफूज पनाहगाह है. पूरी इंसानी तारीख़ में इंसान ने लिखी हुई चीज़ों में सुकून पाया है. किताबें पुल हैं. इनके सफ़हात के ज़रिए हम माशरे से अपना ताल्लुक़ बनाते हैं. जो मुताला करते हैं वह दुनिया का सामना करने के लिए बेहतर तौर पर तैयार होते हैं बनिस्बत उनके जो कि मुताला नहीं करते. There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 4. First one is source, zariya, cause. Comfort, aram, consolation. Shelter, panaga, protection. Bridges, rabta, पुल या ओवरपास. हिस्ट्री, तारीख़, द पास्ट. पीस, अमन, काम. कॉन्टैक्ट, राब्ता, टच. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 4. First one is source. Fruits are source of energy. Comfort, they did everything for our comfort. Shelter, she had to find shelter. बट यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं, बाकी आपने ख़ुद से घर में प्रैक्टिस करनी है. इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के आपने स्पेलिंग्स को भी याद रखना है और इनके मीनिंग्स और सिनोनिम्स को भी याद रखना है. पैराग्राफ नंबर 5. Through reading a book connects us with humanity. It is also the last truly private act in a world that has become too public. As a nourishment for the mind, it is slow food in a world given over to fast food. Blogs, text messages, and e-books bring relevance and instant gratification much as newspapers and magazines do. But
However important such forms are, they endure only as long as the stuff they are printed on. अगरचे किताब के मुताले से हमारा इंसानियत से राब्ता कायम होता है, ये हकीकत में दुनिया में वो आखिरी ज़ाती अमल भी है जो कि बहुत ज़्यादा अवामी बन चुका है। ज़हनी नशोनुमा के लिए दुनिया में इस सुस्त रफ्तार ग़ज़ा को तेज़ रफ्तार ग़ज़ा की खातिर तर्क कर दिया गया है। ब्लॉगर्स, अबारती पैगामात और ई बुक्स भी इसी तरह मुतल्लिका मालूमात और फ़ौरी तस्कीन फ़राहम करती हैं जैसा कि अखबारात और रसाइल करते हैं, लेकिन ये सूरतें चाहे कितनी भी अहम हों, ये सिर्फ़ उस जगह तब तक कायम रहती हैं जब तक वहाँ छपी रहें। The comforts of books defy time and break borders. Books offer other types of pleasure as well. The joy of their touch, sound, and fragrance is immeasurable. The pleasure of their understanding is an addition to it. The sharing of a book with friends is still another form of joy. Libraries are the evidence of grandeur of civilization. किताबों की सहूलतें वक्त को खातिर में नहीं लाती और सरहदों से सबकत ले जाती हैं। किताबें दूसरी तरह की खुशियाँ भी फ्राहम करती हैं। इनको छूने की खुशी और आवाज़ और खुशबू से बेहिसाब है। इनको समझने की खुशी, इसमें एक और इजाफ़ा है। दोस्तों के साथ किताब की शराकत दारी अभी भी खुशी की एक और शक्ल है। कुतुब खाने यानी लाइब्रेरियाँ एक तहजीब की अज़मत का सबूत हैं। स्टूडेंट, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन अ बॉक्स, Why does the author use the term fast food and slow food? मुसन्निफ़ ने तेज़ ग़ज़ा और सुस्त ग़ज़ा का जो ये टर्म है ये क्यों इस्तेमाल किया है? So the answer is the writer creates textual beauty of using the term. Moreover, he contrasts the fast word of technology with the slow word of books. मुसन्निफ़ ने दुनिया की तेज़ तरीन टेक्नोलॉजी को किताबों के ज़रिए यानी कि वर्ड ऑफ बुक्स के ज़रिए साथ कंपेयर किया है इस तरीके से। फ़ास्ट बुक यानी कि फ़ास्ट टेक्नोलॉजी एंड स्लो फूड यानी कि वर्ड ऑफ बुक्स। There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 5. First one is instant, फौरी, immediate. Forms, शक्ल या शकाल, shape. Endure, बर्दाश्त करना, go through. Stuff, मवाद, material. Defy, ठुकरा देना, disobey करना. Fragrance, खुशबू, scent. Sharing, शरीक करना, split. Grandeur, अज़मत, glory. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 5. First one is instant. In that instant, the telephone rang. Form, he has a severe form of illness. Endure, he endured to learn hunger and cold. Paragraph number 6. It is important that we work to give every person the opportunity to enjoy books as shelters, sustenance, and roads forward. To imagine a world without books is to imagine a world without thought, feeling, compassion, history और voice. अहम बात यह है कि हम हर शख्स को किताबों से बतौर पनाहगाह, सेहत बख्श ग़ज़ा और आगे पढ़ने के रास्ते से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका देने के लिए काम करें। किताबों के बगैर दुनिया का तसव्वुर करना एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करना है जो फ़िक्र, जज्बात, रहमदिली, तारीख़ और इजहार के बगैर हो। Student, there is a question in a box. What role does a library play to promote the habit of book reading? So the answer is the libraries promote the habit of reading by offering a variety of good books on all topics. There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 6. First one is opportunity, मौका, chance. Imagine, तसव्वुर करना, assume. Forward, आगे भेजना, onward. Feeling, एहसास, affection. Compassion, रहम, खुदा तरसी, sympathy. Enjoy, लुत्फ़ उठाना, savor. Voice, आवाज़, sound. Sustenance, ज़िंदा रहने का सामान, nourishment. History, तारीख़ यानी past. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 6. First one is opportunity. There are fewer job opportunities in this year. Imagine, I imagine it would tasty, might good. Forward, moving forward must be difficult for him. तो बेटा I think
आपको आई होप अच्छी तरह से समझ आ गई होगी इस पूरे चैप्टर की। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी आपने स्पेलिंग्स को याद रखना है, सिनोनियम और मीनिंग को याद रखना है, और इनके सेंटेंसेस को आपने खुद से घर में प्रैक्टिस करनी है एज अ होमवर्क। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।